हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे क्लास 7 साइंस क्वेश्चन पेपर फॉर आवर हाफ ईयरली एग्जाम्स. सो लेट्स बिगिन. Question 1. Which pigment is responsible for photosynthesis in plants? Now, here are our options. Option A, chlorophyll. Option B, hemoglobin. Option C, melanin. And option D, carotene. Now, the correct answer will be chlorophyll. It is the explanation for this answer. Now, as we all know, chlorophyll contains cells known as chloroplasts. And these cells are responsible for absorbing and capturing sunlight. And as we all know, sunlight is necessary to make food, is necessary for the process of photosynthesis. And because of this, chlorophyll will be the correct answer, because chlorophyll contains these chloroplasts that trap the sunlight, and as we all know, sunlight is responsible for the process of photosynthesis. So the correct answer will be chlorophyll, not hemoglobin, nor melanin or carotene. Okay, now let's do question 2. What is the primary function of the roots in a plant? प्लांट के रूट्स का प्राइमरी फंक्शन क्या है? अब ये हमारे ऑप्शंस है: फोटोसिंथेसिस, अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स, ट्रांसपिरेशन एंड स्टोरेज ऑफ फूड. नाउ इसका करेक्ट आंसर होगा अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. ये करेक्ट आंसर इसलिए होगा क्योंकि जो रूट्स होते हैं प्लांट के वो किसके अंदर होते हैं? वो सॉइल के अंदर होता है. और सॉइल में बहुत ज़्यादा क्या चीज़ें हैं? सॉइल इज अबंडेंट इन वाटर एंड मिनरल्स. एंड जैसे हम सब जानते हैं, वाटर एंड मिनरल्स एक प्लांट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट. हेंस करेक्ट आंसर होगा अब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल्स. फोटोसिंथेसिस तो काम है लीव्स का प्लांट के, एंड ट्रांसपिरेशन ये भी प्लांट के लीव्स का ही काम है प्राइमरली, एंड ये तो अलग. So, correct answer होगा absorption of water and minerals. Okay, now let's do question 3. The process by which plants prepare their food is called, and here are our options: respiration, reproduction, photosynthesis and digestion. Now, correct answer होगा photosynthesis. Pretty obvious बात. photosynthesis से plant अपना खाना बनाता है. ये बाकी सारे अलग प्रोसेस हैं. डाइजेशन बेसिकली जब फूड को सिंपल मैटर में कन्वर्ट कर देते ताकि उसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो ऑब्टेन हो पाए ऑर्गेनिज्म को, एंड ये सब तो अलग ही है. रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन एटसेट्रा. ओके, अब हम करते हैं क्वेश्चन 4. इन विच पार्ट ऑफ अ प्लांट डज फोटोसिंथेसिस ऑक्योर? करेक्ट आंसर होएगा लीव्स. वापस से ये प्रिटी ऑब्वियस है. लीव्स के अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल वाला पिगमेंट. और जैसे मैंने पहले बताया था, क्लोरोफिल इम्पोर्टेंट है सनलाइट को कैप्चर करने के लिए. एंड जब सनलाइट कैप्चर होती है तब कौन सा प्रोसेस होता है? फोटोसिंथेसिस. हेंस लीव्स होगा करेक्ट आंसर. स्टेम्स, रूट्स, फ्लावर्स, इनके डिफरेंट चीज़ें डिफरेंट काम करते हैं या एक प्लांट में. फॉर एग्जाम्पल फ्लावर्स रिप्रोडक्शन में काम पे आते हैं. ओके, नाउ लेट्स डू क्वेश्चन 5. व्हाट गैस इज टेकन इन बाय प्लांट्स ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस? अब ये सारे हमारे ऑप्शंस हैं और करेक्ट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड. करेक्ट आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड. ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन ये सारे गलत आंसर. कार्बन डाइऑक्साइड वेल ये भी प्रीटी ऑब्वियस चीज़ है, लेकिन प्लांट्स टेक इन क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को, फिर वो रिलीज क्या करते हैं? ऑक्सीजन. हेंस बोलते हैं कि प्लांट
हेंस बोलते हैं पेड़ों को प्लांट क्यों करना चाहिए और प्लांट्स को प्लांट क्यों करना चाहिए, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को टेक इन करते हैं और ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। एक और इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि ये पूरा प्रोसेस रिवर्स हो जाता है नाइट टाइम में। जब नाइट होती है तब प्लांट्स ऑक्सीजन को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं, लेकिन अभी के लिए हम अज्यूम कर रहे हैं ये है डे टाइम, क्योंकि तभी तो प्लांट्स फोटोसिंथेसिस कर पाएंगे। हेंस करेक्ट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, नाउ अब हम करते हैं MCQs फॉर फिजिकल एंड केमिकल चेंज। When milk turns sour, it is an example of what type of change? कौन से चेंज का एग्जाम्पल है मिल्क को सावर टर्न करना? करेक्ट आंसर होएगा केमिकल चेंज। करेक्ट आंसर होएगा केमिकल चेंज, क्योंकि मिल्क की फिजिकल प्रॉपर्टी सबसे पहले बायोलॉजिकल चेंज तो ऑब्वियसली गलत आंसर होगा, क्योंकि मिल्क और तो एक बायोलॉजिकल बीइंग से, एक लिविंग बीइंग से निकलता है। हाउएवर वो इटसेल्फ एक लिविंग चीज, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं है, तो बायोलॉजिकल चेंज तो ऑब्वियसली गलत है। एंड नन ऑफ द अबव भी इसी वजह से गलत है, क्योंकि केमिकल चेंज करें ना एक्सप्लेन करने के लिए, जब मिल्क सावर टर्न हो जाता है तो फिर ये फिजिकल चेंज नहीं होता, ये बस फिजिकल प्रॉपर्टी नहीं होती चेंज मिल्क की, लेकिन मिल्क की केमिकल प्रॉपर्टीज भी चेंज होती है। हेंस ये होएगा एक एग्जांपल ऑफ केमिकल चेंज, नॉट फिजिकल चेंज। ओके, नाउ लेट्स डू क्वेश्चन 2। What happens to the mass during a chemical change? अब इसका करेक्ट आंसर होएगा it remains the same. मास ना ही, क्योंकि ये केमिकल चेंज है, ये एक फिजिकल चेंज नहीं है। केमिकल चेंज में केमिकल कंपोजिशन बदलती है, ना ही फिजिकल एट्रीब्यूट्स, तो ये रिमेन होएगा सेम। मास क्या होएगा केमिकल चेंज में? सेम। ओके, अब हम करते हैं क्वेश्चन 3। Which of the following is not a physical change? अब ये हमारे ऑप्शन हैं मेल्टिंग आइस, बर्निंग पेपर, कटिंग वुड एंड डिसॉल्विंग शुगर इन वाटर। ओके स्टूडेंट्स, इसका करेक्ट आंसर होएगा बर्निंग पेपर। Which of the following is not a physical change? कौन से में से इनमें से कौन सा फिजिकल चेंज नहीं है? और करेक्ट आंसर है बर्निंग ऑफ पेपर, बिकॉज जब पेपर बर्न हो जाते हैं तो वो किस चीज में बदल जाता है? वो एक एस में बदल जाता है, ASH, एस। एंड एस की केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है पेपर से, हेंस करेक्ट आंसर होगा बर्निंग ऑफ पेपर या ऑप्शन बी। ओके, अब हम करते हैं क्वेश्चन 4। ये सारे गलत है। ओके, अब हम करते हैं क्वेश्चन 4। रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जांपल ऑफ, एंड ये सारे हमारे ऑप्शंस हैं फिजिकल चेंज, केमिकल चेंज, बायोलॉजिकल चेंज एंड न्यूक्लियर चेंज। नाउ ऑफ कोर्स बायोलॉजिकल चेंज तो ऑब्वियसली गलत रहेगा, क्योंकि आयरन जो है वो एक लिविंग ऑर्गेनिज्म, एक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म नहीं है, वो बायोटिक नहीं है, वो है अबायोटिक, तो बायोलॉजिकल चेंज ऑब्वियसली गलत होएगा। नाउ करेक्ट आंसर होएगा इसका केमिकल चेंज, क्योंकि जब आयरन रस्ट होती है तब वो उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी बदल जाती है। जब आयरन की रस्टिंग होती है उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी बदल जाती हैं, इसलिए तो आयरन वीक हो जाता है, क्योंकि उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज बदलती हैं। तो रस्टिंग ऑफ आयरन है केमिकल चेंज का।
क्योंकि वेल रस्टिंग ऑफ आयरन होती भी किस चीज़ से, जब आयरन कांटेक्ट में होता है एयर के और साथ में वाटर के, तो ये पूरा केमिकल रिएक्शन होता है। जब आयरन कांटेक्ट में होता है या तो एयर के या तो वाटर के, तो फिर एक केमिकल रिएक्शन हो जाता है और उससे आयरन रस्ट हो जाता है। अब हम करते हैं क्वेश्चन 5। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर फॉर वाटर, एंड इसका आंसर है H2O। प्रीटी ऑब्वियस चीज है। H2O करेक्ट आंसर इसलिए है क्योंकि CO2 तो है कार्बन डाइऑक्साइड एंड O2 है ऑक्सीजन, एंड CH4 इज समथिंग डिफरेंट ऑल टुगेदर। जब बस H2O ही है वाटर, H2O इक्वल्स वाटर। ओके, अब हम करते हैं ये वाले MCQs। The process of breaking down food to release energy। हाँ, अब हम करते हैं digestion। अब हम करते हैं इनके MCQs। The process of breaking down food to release energy is called, और ये सारे हमारे ऑप्शंस हैं, digestion, circulation, respiration और photosynthesis। नाउ इसका करेक्ट आंसर होएगा रेस्पिरेशन, बिकॉज सर्कुलेशन सबसे तो एक्सप्लेन करते हैं कि डाइजेशन सर्कुलेशन एंड फोटोसिंथेसिस गलत आंसर क्यों है। सर्कुलेशन तो पूरी डिफरेंट चीज मीन करती है। सर्कुलेशन मतलब ट्रैवल ऑफ ब्लड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी, एंड फोटोसिंथेसिस तो एसेंशियली एक तरीका है जिससे प्लांट अपना खाना बनाता है, एंड डाइजेशन है सिंप्लीफिकेशन ऑफ फूड पार्टिकल्स ऑफ फूड। हाउएवर एनर्जी रिलीज किससे होती है? एनर्जी रिलीज होती है रेस्पिरेशन से। जब हम रेस्पिरेशन करते हैं तब एनर्जी रिलीज होती है और उससे हम एनर्जेटिक हो जाते हैं। तो अब हम करते हैं क्वेश्चन 2। इन विच ऑर्गेनेल ऑफ अ सेल द सेल्यूलर रेस्पिरेशन टेक प्लेस। अब ये सारे हमारे ऑप्शंस हैं, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब करेक्ट आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया, ये बाकी सारे हैं गलत। In which organelle of a cell does cellular respiration take place? इसका करेक्ट आंसर होगा माइटोकॉन्ड्रिया। ओके, अब हम करते हैं क्वेश्चन 3। What is the waste product produced during respiration in humans? अब करेक्ट आंसर होएगा CO2। कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होता है वेस्ट प्रोडक्ट ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। ऑक्सीजन तो हमारे लिए यूजफुल है, एंड वाटर एंड ग्लूकोज ये दोनों वेस्ट प्रोडक्ट्स नहीं है। इसलिए तो ह्यूमंस जो होते हैं जब वो एक्सहेलेशन करते हैं तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को निकालते हैं, क्योंकि वो वेस्ट प्रोडक्ट है हमारे लिए और वो हमारे लिए हार्मफुल भी हो सकता है। चलो अब हम करते हैं क्वेश्चन 4। How many molecules of ATP, endozyme triphosphate, are produced in one molecule of glucose during cellular respiration? कितने मॉलिक्यूल्स बनते हैं ATP के जब एक मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज से सेल्यूलर रेस्पिरेशन करते हुए? अब इसका करेक्ट आंसर होएगा 36 ATP बनता है एक सेल ऑफ ग्लूकोज से जब हम सेल्यूलर रेस्पिरेशन करते हैं, जब हमारे सेल्स रेस्पिरेट करते हैं। सेल ओके, अब हम करते हैं क्वेश्चन 5।
During respiration, glucose is oxidized to produce energy. What is the final product? तो इसका करेक्ट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। बाकी सारे हैं गलत, क्योंकि जब रेस्पिरेशन करते हैं तो ग्लूकोज ऑक्सीडाइज होता है और उससे एनर्जी होती है। फिर इसका फाइनल प्रोडक्ट क्या होता है? इसका फाइनल प्रोडक्ट हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। ओके, अब हम करते हैं fill in the blanks questions। तो चलो शुरू करते हैं। The tiny openings on the surface of leaves through which gases enter and exit are called dash। अब इसका करेक्ट आंसर होगा स्टोमेटा। S इसका करेक्ट आंसर होगा स्टोमेटा होती है टाइनी ओपनिंग्स ऑन द सरफेस ऑफ लीव्स थ्रू व्हिच गैसेस एंटर एंड एग्जिट। हमने पढ़ा भी होगा स्टोमेटा के बारे में। ओके, अब करते हैं क्वेश्चन 2। The process of making food in plants using sunlight, carbon dioxide and water is called photosynthesis। फोटोसिंथेसिस। ओके, अब हम करते हैं क्वेश्चन 3। लेट्स मूव ऑन टू क्वेश्चन 3। Dash is the green pigment in plant cells that captures sunlight for photosynthesis। The correct answer is chlorophyll। Chlorophyll। Okay, now let's move on to question 4। Let's move on to question 4। The product of a plant, the part of a plant that conducts photosynthesis is mainly the leaves। LEAVES। The part of a plant that conducts photosynthesis is mainly the leaves। Question 5। The process of losing excess water in the form of water vapor through tiny openings in leaves is called transpiration। The process of losing excess water in the form of water vapor through tiny openings in leaves is called transpiration। Okay, अब हम करते हैं physical and chemical changes के फिलअप्स। A change that alters the chemical composition of a substance is called dash change। The correct answer will be chemical।
chemical change. The change that alters the chemical composition of a substance is called chemical change. Question 2. Let's move on to question 2. Now let's move on to question 2. When a candle burns, it undergoes a dash change. The correct answer will be it undergoes a chemical change, because the burning of a candle will alter its chemical properties or its chemical composition. So it will undergo a chemical change. Okay, now let's move on to question 3. During a chemical change, new substances with different dash properties are formed. The correct answer will once again be chemical. Whenever a chemical change happens, if any new substance is formed in the chemical change, then it will have different chemical properties. All these 3 questions have chemical as their correct answer. Okay, now let's move on and do question 4. A physical change can often be reversed by dash means. Dash मतलब dash का correct answer रहेगा mechanical. Mechanical means. Mechanical means. A physical change can often be reversed by mechanical means. अब करते हैं question 5. The process of changing a liquid into gas is called dash. Correct answer vaporization. Correct answer vaporization. Now let's finally do the respiration in organisms fill-ups. Respiration is the process by which cells produce dash from food. The correct answer is energy. Respiration is the process by which cells produce energy from food. E-N-E-R-G-Y. Energy. Now let's move on to question 2. The organelles responsible for cellular respiration in a cell are the dash. The correct answer will be mitochondria. Are the mitochondria. The organelles responsible to cellular respiration in a cell are the mitochondria. Okay, now let's do question 3. The waste product of respiration in humans is carbon dioxide. The waste product is carbon dioxide or CO2. CarbonDioxide.
respiration in humans is carbon dioxide. Okay, now let's do question 4. During respiration, glucose is broken down into gas and the energy. Now, glucose is broken down into energy. Yes, glucose is broken down into carbon dioxide. During respiration, glucose is broken down into carbon dioxide. Okay, now let's do the final question. Question 5. The first stage of respiration, which occurs in the absence of oxygen, is called gas respiration. And the correct answer will be anaerobic respiration. Anaerobic. ROBIC. The first stage of respiration, which occurs in the absence of oxygen, is called anaerobic respiration. Anyway students, that is it for today. I hope you will enjoy the video and make sure to support our channel by subscribing to it and by hitting the bell icon. You can also support our videos by liking it, sharing it, and maybe even leaving a comment on it. I hope you will enjoy the video and keep learning.